Hello. Now the third lecture is on electromagnetic waves. अब waves जो है that is nothing but transporting energy or transporting information. Mathematically it can be a function of both space and time. Okay. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बिहेव करती हैं when they go through dielectric, lossy dielectric medium, or it goes from the perfect dielectric medium, whether when it goes through a good conductor. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बिहेव करती हैं उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो पहला केस जो ले रहे हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक. ओके, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे उस मीडियम से पास करती जाए वैसे वैसे उसका पावर लॉस होता है, ठीक है. तो ऐसे मीडियम को हम लोग लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं. और ये जो पावर लॉस होता है दैट इज ड्यू टू द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम. जो मीडियम की कंडक्टिविटी पुअर होने की वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पावर लॉस होता है. ओके, फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम we normally take the parameters as the conductivity will be having some value, that means it will be non-zero. Epsilon will be the permittivity will be equal to epsilon r into epsilon naught, where epsilon r is relative permittivity of a medium, epsilon naught is the permittivity of the free space, and mu permeability will be equal to mu r into mu naught, where mu r is the relative permeability of the medium and mu naught is the permeability of the free space. Okay. Now, for the generalization, we consider that the medium is linear, isotropic, homogeneous, okay, and the medium is also charge free. That means rho v equals to 0. Now, taking all these conditions for a lossy dielectric medium, the Maxwell equation will be something like this. जो आपकी पहली Maxwell equation थी, जो गॉस लॉ थी, जो कहती थी कि del dot t is equal to rho v. Okay. Now, for this case, the rho v is 0. That means del dot d will be equals to 0. If del dot d is equals to 0, by using the constitutive equation, we can also say that del dot vector E equals to 0. Similarly, second equations, that is del dot B equals to 0, can also be replaced as del dot H equals to 0, because B is nothing but mu H. Okay. Now, third equation, as we have derived in the case of a harmonically varying fields, as the EM wave is nothing but a harmonically varying field. Therefore, del cross E in this case will be minus j omega mu vector H, and del cross of H will be sigma plus j omega E into vector E. Okay. Now, these are the four Maxwell equations. Now, taking the curl of third equation, this one. Taking the curl of third equation, you will be getting del cross E, which is equal to minus j omega mu del cross of H. You are introducing del cross over here and del cross of H here. Expanding this, you will be getting del of E minus del square E equals to minus j omega mu, and in the place of del cross of H, we can place sigma plus omega E epsilon. In the place of del cross of H from equation 4, we substitute the value. You will get in minus j omega mu sigma plus omega epsilon into vector E. Okay, this will be equal to del square vector E equals to gamma square E, where gamma is nothing but gamma square is
nothing but minus j omega mu sigma plus omega epsilon. Then gamma square is equal to j omega mu sigma plus j omega epsilon. Okay, where this gamma is nothing but propagation constant. By a similar procedure, we can say that del square h, vector h is gamma square vector h. Okay, both the equations are known as vector Helmholtz equation, or simply vector wave equation. Okay, now this gamma propagation constant ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो कि कॉम्बिनेशन होती है अल्फा एंड बीटा की, एंड दिस इज गिवन एज गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट एटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज योर फेज कांस्टेंट. Attenuation constant is simply the measure of the spatial rate of decay of the wave in the medium. और you can simply say that कि किसी भी मीडियम में जब वेव प्रोपोगेट करती है तो वो पर मीटर कितना डिके कर रही है, दैट इज गिवन बाय एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो होता है दैट इज नैपर पर मीटर. ओके, नैपर इज अगेन अ यूनिट कि जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही है और वो उसका मैग्नीट्यूड 1/e टाइम्स होता जा रहा है, देन पर्टिकुलर रिडक्शन इज नोन एज नैपर. ओके, नाउ फेज कांस्टेंट मेजर करता है कि जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में से ट्रेवल कर रही है तो वो कितना फेज लैग करती जा रही है. ठीक है, वो वेव कितना फेज चेंज आ रहा है उसके अंदर पर मीटर मूव करने पर, एंड इट इज नॉर्मली गिवन एज रेडियन पर मीटर. ओके, तो दिस एज अ होल इज नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, that is gamma, which is equal to alpha plus j beta. Now come over here. The gamma equals to alpha plus j beta. If you square this, if you square this gamma square, it will be alpha square minus beta square plus 2j alpha beta, which will be according to the previous one. Gamma square is nothing but j omega mu into sigma plus j omega epsilon. उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी सिग्मा ओमेगा म्यू जे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका ये, इसका रियल पार्ट ये है, एंड इमेजिनरी पार्ट अगर कंपेयर करें यू विल बी गेटिंग अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, and 2 alpha beta will be equal to sigma omega mu. Now solving these two equations for alpha, you will be getting alpha equals to omega under root mu e upon 2 in the bracket again a square root 1 plus square of sigma upon omega epsilon minus 1. Similarly, you will be getting beta, which will be equal to omega square root of mu epsilon upon 2 in the bracket square root open 1 plus square of sigma upon omega epsilon minus 1. So for lossy dielectric, these are the parameters. This is the attenuation constant for a lossy dielectric medium. This is the phase constant for a lossy dielectric medium. This shows the behavior, how the electromagnetic wave is behaving while passing through a lossy dielectric medium, how it is attenuating, how phase is changing as it is moving through the medium. Going into the derivations for the case of a dielectric and a good conductor, how will we classify them or differentiate them for EM waves? कि कोई पर्टिकुलर मीडियम इट इज ए गुड डाइलेक्ट्रिक और अ गुड कंडक्टर, ये हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सो जरा देखते हैं. दैट इज कंसिडर कैसे कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर कंडक्शन करंट और डिफरेंशियल और डिस्प्लेसमेंट करंट का रेशियो निकाले
ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का अगर रेशियो निकाले किसी मीडियम के अंदर, देन इट विल बी कंडक्शन करंट कैन बी गिवन एज सिग्मा ई, इसका मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी गिवन एज जे ओमेगा वेक्टर डी. वेक्टर डी इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन वेक्टर ई. ओके, इसमें ये दोनों का मैग्नीट्यूड का डिवीजन होना है. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ई कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो जे आपका रिप्लेस हो जाएगा. तो फाइनली यू विल बी गेटिंग सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, which is equal to some tan theta. This tan theta is nothing but loss tangent of a medium, or this is known as loss. This particular theta angle is known as loss angle of the medium. Now, by this loss tangent or loss angle, we can tell about that the medium is dielectric or good conductor. If sigma is very much greater than omega epsilon, अगर सिग्मा की वैल्यू ओमेगा एप्सिलॉन से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इन दैट केस tan थीटा की वैल्यू काफी हाई होगी. इन दैट केस tan थीटा इज वेरी हाई. दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर. बट नेचुरल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर ओमेगा एप्सिलॉन से ज्यादा है तो गुड कंडक्टर होगा ही होगा. ओके, सिमिलरली if sigma is very much less than omega epsilon, in that case the loss tangent is having low value. That means it is a good dielectric. Again, practically conceptually say, अगर simply the conductivity और अगर उसकी वैल्यू कम है ओमेगा एप्सिलॉन से, काफी कम है, तो पता चला डायलेक्ट्रिक ही होगा. ओके, और in the term of loss tangent, loss tangent's value is very much high, that means it's a good conductor. If loss tangent is having very low value, that means it's a dielectric. Okay. Now, consider the case when the plane wave is in a good dielectric. Good dielectric means again sigma is very much less than omega epsilon, or sigma by omega epsilon is very much less than 1. For a good dielectric, ideally, sigma should be almost equal to 0. Epsilon is equal to epsilon naught, epsilon r, mu equals to mu naught, mu r. If you substitute this value in the previous equation of alpha and beta, you will find that alpha comes to 0 and beta comes to equals to omega under mu epsilon. As you remember, the previous equation, alpha was omega under root mu epsilon upon 2 in the bracket, this whole thing. If you substitute sigma upon this value, negligible over here, this whole term becomes 0. Similarly, in the case for beta, it is positive plus 1. That means if you are substituting this as 0, this will convert into 2. 2 will be divided, 2 will be cancelled, and you will be getting beta equals to omega mu under root mu epsilon. Okay, this was for the ideal case. But in the reality, this the conductivity is not almost 0. There is some conductivity. So for practical purpose, we can expand this by using the binomial theorem. 1 plus sigma square upon 2 omega square epsilon square, plus there will be some higher values which can be neglected because sigma upon omega epsilon is very much less than 1. Therefore the higher values can be neglected. You can put this value over there and finally cancel out this one, and you will be getting alpha is equal to sigma upon 2 under root mu by epsilon, which is the more practical value of alpha in the case of a plane wave which is traveling through a good dielectric. Beta equals to again omega under root mu epsilon by 2 in the bracket. Again जो अंडर रूट था वहां पर मैं ये रख रहा हूं, ठीक है. अगर इसमें से
This is twice, sorry. This is twice. इसमें से ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इसे कॉमन लेगी तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. ओके. एंड इसका अगेन मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो और हायर टर्म्स को निगलेक्ट करूं तो यू विल बी गेटिंग ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन in the bracket 1 plus sigma square 8 omega square epsilon square. Now this is the practical value of beta in the case of a good dielectric. Okay, so this was the attenuation constant and the phase constant for a good dielectric case. Now we come to the third case, that is a plane wave in a good conductor. Okay, for a good conductor, as we seen before, that sigma was very much greater than the omega epsilon. Conductivity value is very much greater than omega epsilon. Or you can say, in this case, the conduction current will be much more than the displacement current. Okay, mathematically, sigma, therefore, from this, sigma will be sigma upon omega epsilon will be very much greater than 1. Very much greater than 1. Okay. Now, from the previous equations, we know that gamma square is equal to j omega mu in the bracket sigma plus j omega epsilon. Okay. Now, I take out this sigma from this bracket. You will be getting 1 plus j omega epsilon upon sigma. Okay. As we have considered that sigma upon omega epsilon is very much greater than 1, in that case, this will be nullified. And you will be getting j omega mu sigma. Okay, the gamma square will be equal to this. From this, gamma will be under root of this j omega mu f sigma. Okay, now omega mu sigma is okay. Under root of j is nothing but cos 45 plus j sin 45. By the application of De Morgan's theorem, it will be cos 45 degree plus j sin 45 degree. And we know that the value of cos 45 and sin 45 is nothing but 1 by under root 2. Okay. In that case, you will be getting under root omega mu sigma upon 2 plus j under root omega mu sigma by 2. Okay. This is alpha plus j beta. That means in the case of conductor, the equation for attenuation constant as well as the phase constant will be the same. That is under root omega mu sigma by 2. ठीक है. For तो गुड कंडक्टर के केस में एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट, दैट मींस जिस तेजी से एटेन्यूएट वेव करेगी उसी तेजी से उसका फेज चेंज भी होगा किसी भी मीडियम के थ्रू जैसे वो मूव कर. ओके. इसके अलावा जो एक पैरामीटर कंडक्टर के केस में आता है, दैट इज स्किन डेप्थ. It is defined as the depth in which wave has attenuated to 1 by E or approximately 37% of the original value. Normally metals में होता क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत तेजी से एटेन्यूएट करती है, therefore वहां पर EM waves only on the surface रहती है. ठीक है. तो that why that particular effect is also known as skin effect. Okay. तो जब आपकी वैल्यू 1 बाय ई टाइम्स हो जाए और 37% रह जाए, ऐसी डेप्थ को हम स्किन डेप्थ कहते हैं. ओके. अब प्रैक्टिकली जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करेगी तो जो एटेन्यूएट करेगी दैट विल बी एटेन्यूएटेड बाय e to the power minus alpha x. When the wave is moving in the s direction, it will be attenuating by e to the power minus alpha time. Okay, e to the power minus alpha x. And as the definition is saying that when the value is e to the power minus 1, that particular depth is known as skin depth. So e to the power minus alpha x, अगर इसको मैं e to the power minus 1 से इक्वेट करूं तो alpha x will be equal to 1 and that particular x is known as skin depth, which is denoted by delta. Alpha delta will be equal to 1. Okay, therefore delta will be simply 1 by alpha. Okay, for the case of conductor, delta will be 1 by alpha
if you put the value of this alpha over here, you will be getting under 2 upon omega mu sigma. So this is the skin depth in the case of conductor. Okay, तो ये वो मतलब कि स्किन डेप्थ देखा जाए तो बेसिकली वो डेप्थ है जहां तक ईएम वेव हमारे लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल. इसके बाद का जो ईएम वेव है मतलब बिलो 37 पोटर इट्स नॉट यूजफुल. दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ कंडक्टर. स्किन डेप्थ कैलकुलेट की जाती है बहुत से ट्रांसमिशन लाइंस की, वेवगाइड्स की. देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ अ गुड कंडक्टर. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रिंसिक इंपीडेंस और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. हैव अ नाइस डे.